Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video we are going to discuss that how to attempt board papers including OMR sheet. But before going further, please subscribe to my channel and also press the bell icon to get notifications of all new videos. Now let's start with OMR sheet. OMR stands for Optical Mark Recognition. This OMR sheet can be divided into 4 parts. We will discuss all the parts one by one. First, we will discuss part 1. You have to fill all these parts carefully. So, in the first part, you have to write your roll number. For example, your roll number is 122416. You have to write the first digit of your roll number in the given box and you have to fill the relevant bubble. Now let's take an example of the roll number 122416. Now what you have to do is you have to write the first digit, which is 1, in the box, and then you have to fill the relevant bubble. Then you will write 2 in the box and then fill the bubble 2. Then again 2 in the box and you have to fill bubble 2. Then 4 and then 1 and the last one is 6. Now in the next box you have to write the question paper version number. This question paper version number will be written on question paper. So you have to pick that question paper version number from your question paper and then you have to write it here. For example, your version number is 6458. Now again you will fill in the same way. Like 6 in the first box and then you have to fill the bubble 6, then 4 and the bubble 4, then 5 and bubble 5 and then 8 and you have to fill bubble 8. Now for example, if you fill the wrong bubble like this, कि आपने bubble 1 को fill करना था लेकिन mistakenly you filled bubble 0, then this will be considered wrong. और अगर आप bubble completely fill नहीं करते तो this is also wrong. And let's suppose if you fill the bubble like this, that's again wrong. So be careful while you are filling the bubbles. Now let's see which is to be filled in part 2. सबसे पहले you have to fill your roll number. For example, your roll number is 122416. इसके बाद आपने अपना क्वेश्चन पेपर वर्जन नंबर जो कि 6458 है वो लिखना है. Then you have to write your subject. For example, your subject is biology. So you will write like this, biology 1. And remember, this filling is for 9th class students. और अगर आप 10th के student हैं तो then you will write biology 2. इसी तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बायोलॉजी 1 और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बायोलॉजी 2 लिखेंगे. And the same pattern will be followed for other subjects. जैसे 9th और फर्स्ट ईयर के लिए फिज़िक्स 1, केमिस्ट्री 1, मैथ्स 1 and so on. And इसी तरह 10th और सेकेंड ईयर के लिए फिज़िक्स 2, केमिस्ट्री 2, मैथ्स 2 and so on. उसके बाद next is paper. In this you have to tick part 1 if you are 9th student and you have to tick part 2 if you are 10th student. इसी तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पार्ट 1 को टिक करेंगे और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पार्ट 2 को टिक करेंगे. नेक्स्ट इज़ कैंडिडेट्स सिग्नेचर. यहाँ आप अपने सिग्नेचर्स करेंगे. एंड डू रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू शो योर आइडेंटिटी एनीवेयर ऑन OMR शीट और योर क्वेश्चन पेपर और योर ई शीट. अपना नाम, अपनी कोई अलामती शनाख्त या अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर आप कहीं भी शो नहीं करेंगे. दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द रूल्स ऑफ फेडरल बोर्ड. इसके बाद नेक्स्ट इज़ इन्वेजुलेटर्स सिग्नेचर. यू डोंट हैव टू फिल इट. दैट इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेजुलेटर हु इज़ ऑन ड्यूटी. सो ही और शी विल फिल इट. Now let's move to the next part of your OMR sheet. Here you have to attempt your MCQ question. आपके पेपर का सेक्शन ए जो MCQs पर मुश्तमिल है वो आपको दिया जाएगा और आपको वो MCQs इस OMR शीट पर फिल करने होंगे.
फिल करने का तरीका ये है, आपके ख़्याल में जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको उस बबल को कम्प्लीटली फिल करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, देन यू हैव टू कम्प्लीटली फिल द बबल। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और बबल को कम्प्लीटली फिल करना है। अगर आप बबल को कम्प्लीटली फिल नहीं करते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर होगा। इसी तरह अगर आपकी फिलिंग बबल से बाहर है तो भी रॉन्ग है, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट की जाएंगी तो वो भी रॉन्ग कंसिडर होंगी। और अगर एक ऑप्शन क्रॉस करके उसको दोबारा अटेम्प्ट किया गया तो ये भी रॉन्ग कंसिडर होगा। अब बात करते हैं OMR शीट के पार्ट नंबर 4 की। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। You can read those instructions before attempting your OMR sheet, and I am also going to discuss these instructions in this video. So इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। Okay, now let's see. In the OMR sheet there is a barcode in the middle of the paper. This is basically the number of your OMR sheet. हर एक OMR शीट का नंबर डिफरेंट होगा, so you have to use your own OMR sheet's number. Now let's discuss the instructions that how to solve MCQs on OMR sheet. Use of lead pencil is strictly prohibited. The candidates are allowed to use blue or black ballpoint or markers only. यानी OMR शीट को सॉल्व करने के लिए आप पेंसिल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट एंड मार्कर्स आर अलाउड। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ दैट डू नॉट बेंड फोल्ड और स्टेपल दिस शीट। आपने OMR शीट को ना ही फोल्ड करना है और ना ही उसे स्टेपल करना है। Now there is a tip to solve the MCQ sheet, and the tip is that use blue or black ballpoint instead of marker. And this tip is because when you use marker, the ink of the marker can spread on your paper, and the ink of the ballpoint cannot spread on your paper. तो अगर आप marker use करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्कर की इंक पेपर पे फैल भी सकती है। अगर आप बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं तो फिर उसकी इंक आपके पेपर पे फैलेगी नहीं। इट्स टोटली योर चॉइस दैट यू वांट टू यूज़ मार्कर और बॉल पॉइंट, बट इन माय व्यू आई थिंक बॉल पॉइंट इज़ बेटर देन मार्कर, एंड द चॉइस इज़ योर्स. I hope that you liked the video. In the next video, we will discuss that how to solve E sheet and B sheet. So please keep watching my channel. Take care and Allah Hafiz.